First time I met with him, it was 2022 in Chennai. I think it was an FBR event of Sudha. And in 2022, about 2 years ago, we were in a vegetarian restaurant which I never like. I'm sorry, but I was there because Sagar was there. And this guy was sitting alongside him. I settle down, everybody. I hear a murmur. Murmur. M-U-R, not Hindi wala murmur. Why do we have a murmur? No murmur? Okay, alright, cool. So, my dear friends, in 2022, when I first met with him, I remember he was just like shy, very introvert, alright, overwhelmed with our presence because Saga was there, I was there, some other people who were already, into the coaching business, they were there. And he was just a very silent person sitting somewhere in the corner, very less spoken. That was 2022 in that Chennai restaurant. Okay. Fast forward 1 year, I was scrolling Instagram and suddenly I see a notification that this guy is doing a live podcast with some of the greatest coaches of India, like MV Priyank, right? Like Gopal Krishnan, come on, like Karthik Naidu, right? And not only that, international speaker, international coaches like John Lee Dumas, Pablo Gonzalez, and Chris Lowe. And that was 2023. 2022, he's not able to speak properly, even 2 words in English properly, one sentence correctly. And that's because I'm a communication coach and keep noticing all those stuff. 1 year after, he's doing podcasts with some of the greatest in the industry. Fast forward 1 more year, and he is right here, right now, with us, about to own the stage after having an absolute suite of awards yesterday. Ladies and gentlemen, please welcome the podcast coach of India, Nilesh Jain. How many of you all remember this photo from the movie Mahendra Singh Dhoni? Yeah. Yes? Yes. This is the same situation happened in my life. I am going to share it with you. Most of you know me because Sagar bhai ne mujhe famous कर रखा है. Dream 100. How anybody here who don't know? सब सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या पॉडकास्ट करता है, कैसे क्या करता है. So I'm going to share it with you. July 2019. I completed my Masters of Computer Application, MCA. एक ऐसा एजुकेशन डिग्री जो कि बहुत वैल्यूएबल है एंड जिसकी बहुत वैल्यू, बट मुझे वो नहीं करनी. आई जस्ट परस्यू दैट बिकॉज माय पेरेंट्स वांट मी टू परस्यू. कर ले, गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ गया है, तुझे क्या प्रॉब्लम. आई डिड इट. जब कंप्लीट हुआ एंड देयर इज अ टाइम टू गेट आउट फ्रॉम द होम एंड गेट द जॉब. घर के पास में एक कंपनी थी, अप्लाई किया वहां पे. इन एन कोल्ड एसी रूम, मेरे हाथों में पसीना था, माय बॉडी फिल्ड विद स्वेट, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं उस इंटरव्यू को क्रैक कैसे करूं. एंड ऑल्सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू परस्यू दैट वन path, that one career. I completed that, and as it is, I didn't get that one job. And then after, I got a job in different industry, which is selling home loan. And I didn't get that one job because of my capability. I got that one job because of that company is looking to hire people. तो HR ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए, इस तरीके से एरिया सेल्स मैनेजर को अपना इंटरव्यू देना, you get qualified. I did it. I got qualified. And then after, on first day of my job, मेरा ब्रांच मैनेजर मुझे बुलाया and he said, नीलेश, बस स्टैंड पे जाओ and जो पार्किंग एरिया है वहां पर जो पैम्पलेट में दे रहा हूँ उन गाड़ियों पे पार्क करके. As you can see this picture. So this is the first photo where I am sticking the pamphlet in that one parking.
एंड ये सेम काम था मेरा for 6 to 8 months. I did that one thing. When I did this task, I'm like, ये क्या हो गया? मैं बस स्टैंड की पार्किंग में गया एंड मैं वहां पे 1 घंटा बैठा, 1 घंटा 2 घंटा, एंड आई एम थिंकिंग कि ये क्या हो गया? Coming from well reputed family, having a good education degree for 6 to 8 months, एंड जिसमें मुझे नियर बाय ग्रोसरी स्टोर में जाना होता था मार्केटिंग के लिए, टू मार्केट माई सेल्फ, टू मार्केट द कंपनी, ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग. आई डिड इट बिकॉज थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं क्या करूँ. When I completed that, उस दिन 1 घंटा बैठा वहां पे पार्किंग में, and as I said, Mahendra Singh Dhoni was sitting at railway station and I am sitting at bus stand. I did it, and then COVID hit, March 2022. Yeah, sorry, 20. COVID-19. 2020 March, May 2020 में I lost that one job. I'm again on the same page where I was in July 2019, जहाँ पे ये जो एजुकेशन कंप्लीट हुआ वो कुछ और था, जॉब करी वो कुछ और थी. I'm again like, what is next for me? So I started searching on internet, roaming here and there. I searched a famous keyword, which is, I think you all search, maybe. That is how to make money online. Raise your hand if you all have searched that one keyword. Raise your hand if you have done it, right? So I searched that one keyword and then I found Amazon affiliate marketing, blogging, SEO, web design. I tried so many different things. But nothing is working because I'm trying everything for free. या तो मैं Udemy की कोर्स खरीद रहा था या फिर YouTube से चीजें सीख रहा था. And then September 2020, September is my birthday month, so I decided कि if I wanted to grow, I need a mentor who can guide me. So I joined a community, and guess what? I found a mentor, and an amazing person, a creator, a founder of Tribe Building Mastermind. He's sharing his videos there, and more or less, उन्होंने एक क्लिक फनल की affiliate income का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, $100-200, और वो मुझे अटेंशन ले गया कि यार मैं भी प्रमोट कर रहा हूँ, मैं भी ये सारी चीजें कर रहा हूँ, बट मुझे तो $1 नहीं मिला, इनको कैसे मिला? So I connected with him. And discussion started, and from that point of time. And in the same time, September 2020, I found a book, .com Secret, by Russell Brunson. How many of you have read that? Sagar bhai ne sabko suggest ki hai wo book. And in this book, the idea of becoming a reporter, जो Dream 100 सागर भाई ने मुझे famous किया, the concept is how you can become a reporter and take interview with experts. वो ट्रिगर कर गया मुझे. I'm like, ये मुझे करना है. बट माइंडसेट क्या था? डरपोक वाला. Who am I? I have a lot of limiting beliefs. Who am I? I'm not good with communication at all. मेरे को तो कोई जानता भी नहीं है. कैसे करूँगा ये सारी चीजें? So I didn't take any initiative at that point of time. And with this, 2020 जो है वो almost complete हो गया. And the year 2021 is there. 2021 में I decided कि I want to become version 1 at least. ज़्यादा नहीं तो version 1 तो बन के. And उसी टाइम पे सागर भाई कॉल मी, नीलेश तुम बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हो, ट्राइंग हियर एंड देयर. रसल ब्रंसन नया चैलेंज स्टार्ट कर रहा है $100 एंड जॉइन इट. ये कैसे होगा? लाइक
I'm a little bit overthinking कि मैं करूँ ना करूँ, but as there is in my head कि version 1.0 तो बनना है, I decided let's go all in. So as you can see that picture, उस दिन रात के 1:25 पे मैंने वो इनिशिएटिव लिया and I joined it. वो बहुत बार होता है ना कि आपका ड्रीम कस्टमर्स का पेन पॉइंट ढूंढो, so एक पेन पॉइंट ये था. This is when you are deciding your target audience. I joined it and उसी में I found a video by Russell Brunson. If you do 365 days of Facebook Live, your life will transform. Wow. और सागर भाई तो ऑलरेडी कर रहे हैं. बट जनवरी में मैंने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि मैं ये करूं. एंड आफ्टर अ मंथ, February 2021, I decided कि चलो करते हैं. 11 फरवरी 2021 पहला फेसबुक लाइव किया, 10वां फेसबुक लाइव किया, 50th फेसबुक लाइव, 100 हुआ, 365 डेज हुआ. बट जब when I completed my 100th फेसबुक लाइव, एक पर्सन मुझे मैसेज किया ऑन फेसबुक, नीलेश, आई एम कमिंग अप विद अ न्यू प्रोडक्ट एंड आई थिंक तुमने एक अच्छी ऑडियंस बना ली है, थोड़ी सी अच्छी, मतलब थोड़ी सी फेसबुक लाइव के लिए. क्या तुम मेरे को इंटरव्यू करोगे तुम्हारी प्रोफाइल में? This is the thing coming back to me once again. Thank you. जो मैंने सितंबर 2020 में डिसाइड की थी. First, when I see that message, I was like, again overthinking, करूँ ना करूँ. But उसी टाइम पे मैंने जो कम्युनिटी ज्वाइन की थी और जो मेंटर थे हमारे, एक बहुत पावरफुल कोट था वहाँ पे, opportunity knock your door always once, and it's your time to grab it. मैंने वो कोट को ले लिया और वो अपॉर्चुनिटी ले ली. And see the universe calling for me. Okay, this is May 2021. Completed 100 days of Facebook Live. I grabbed that one opportunity and उसी टाइम पे एक पर्सन ने मुझे मैसेज किया, नीलेश, I am starting my podcast coaching, interview podcast, where I am going to teach you how you can do interviews, how you can learn all this process, how you can invite great entrepreneurs and all. See the universe calling for me again कि जो चीज मुझे करनी थी September 2020 में आई, it's coming back to me. And उस टाइम I grabbed that one thing, again opportunity जो कि मैंने ले ली. And because of that, पहला इंटरव्यू पॉडकास्ट हुआ, 10वां इंटरव्यू पॉडकास्ट हुआ, 50th इंटरव्यू पॉडकास्ट हुआ. This is the first interview, 1st June 2021. Last month itself, I completed my 100th interview podcast with one of the top marketer in the industry, top 10 marketer. Thank you so much. 100th episode with this one guy, जिसके बहुत सारे फिल्म हैं, and even अमित भाई is a big fan of this guy. So वो लड़का जो HR के सामने जॉब इंटरव्यू देने के लिए डर रहा था, नाउ टेकिंग इंटरव्यू विद CEOs, फाउंडर्स, बिना डर के, बिना झिझक के, with full of confidence. And if I summarize my entire journey in 6 steps, how many? 6. वापस? 6. Thank you. Number 1, association. This is the picture you can see. Here is my association. Hamid Paji, Rahat, Sagar Bhai. First is Sagar Bhai in my life, then Rahat and Hamid Paji. I'm grateful for all of you because of this association where I am right now. ये लोग, if you don't believe in yourself, ये लोग, तू कर लेगा नीलेश, तू बेस्ट है. Wow, ऐसे. But your association that matters the most. And this is one of the biggest learning, biggest story I can share. And second is consistency. I'm not a consistent person at all. बहुत सारी चीजें मैं लेता हूँ but वो करता नहीं हूँ. But अगर वो मैंने ठान ली
सो आई कैन मेक इट पॉसिबल। और लाइक किसी ने पूछा था कि कैसे 365 डेज कर लेते हो, वो मैंने कहीं अनाउंस नहीं किया था। आई जस्ट कीप इट इन माई हेड कि मुझे ये करना है। मैंने पहला किया, फिर कंटिन्यू किया 10 दिन, फिर 50 डेज किया, फिर 100 डेज किया, एंड दैट्स हाउ 365 डेज हुआ। एंड कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। तो आप पहला जो ये लाइव किया था मैंने, उसको देखोगे और जो आज की वीडियो देखोगे, जमीन आसमान का फर्क है। There's a huge difference. Next, never giving up attitude. And ये पॉइंट बहुत हेल्पफुल रहा है मेरी लाइफ में। एंड इवन आई एम समटाइम वेरी डाउन इन माई लाइफ। मुझे लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट आई शेयर विद यू, दैट इज एसोसिएशन। योर प्रॉक्सिमिटी इज योर पावर। टोनी रॉबिन्स का वीडियो चला था ना सागर भाई 30 डे चैलेंज में, योर प्रॉक्सिमिटी इज योर पावर। सो द एसोसिएशन इज हेल्पिंग यू कि आपको वो लोग गिव अप करने ही नहीं देंगे। And that's where never giving up attitude helped me a lot. And not being perfectionist. I have a question for all of you. कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मैं अपना कोचिंग स्टार्ट करूंगा तब जब मेरे पास अच्छा सेटअप होगा, या फिर मैं अपनी लैंडिंग पेज होगा, सारी अच्छी चीजें होंगी तभी मैं अपना काम करूंगा। Raise your hand if you are. I have a request for all of you, और रिक्वेस्ट ले लो या फिर जो भी delete this thought from your head कि मुझे perfectionist बनना है। जो मेरा पहला पॉडकास्ट मैंने किया था, that was at my home, and उसको मैंने किया था with my mobile hotspot। ब्रॉडबैंड नहीं था, मोबाइल हॉटस्पॉट, घर की जो ट्यूबलाइट है वो चालू किया, एंड ऐसे ही नॉर्मल बैकग्राउंड, एंड आई स्टार्टेड देयर, एंड स्टिल देयर इज नो परफेक्शनिज्म। कुछ अच्छा बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं है, बट नॉट बीइंग परफेक्शनिस्ट हेल्प मी अ लॉट। सो shout out loudly कि you all can shout out that I am not going to be perfectionist and I am going to start whatever I want to start. Do it right now. Awesome, thank you. Next, ask. ये मेरा favorite quote है. If you don't ask, the answer is always no. And इसी ने मुझे 100 interviews करवाए. But यहाँ पे जो ask है वो बिल्कुल different है. And that is, everybody have a problem or challenges in their life, but you all can ask from your mentors, from your people from whom you can get help. You all have the challenges, we all have the challenges, but when you ask, you get the solution, you get the answer. If it's from your mentor, if it's from your friend, relatives, colleagues, जो भी है. And by listening all of this point, I have one more question for all of you. How many of you feel that you are greater than you know by listening all of the point of my journey? How many of you feel that you are greater than you know? Raise your hand. No, I don't see any energy. एक बार और जोर से. Yes. So please stand up. Everybody, put your hand on your heart and say, I'm greater than I know. 3 times. I'm greater than I know. I'm greater than I know. I am greater than I know. Thank you so much. Please have a seat. जाते जाते सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, and that is, if this common man can do one common thing, why don't you?